Good evening, guys. We already studied the chapter what democracy, why democracy. We learned something about it. What democracy mean? And democracy कहले कौन हमें पढ़ी सारी तो आज देखिए why democracy कौन पे हमको ये दरकार कौन पे democracy हवा दरकार why democracy. An argument broke out in Madam Lingdo's class. She had finished teaching the previous section on what is democracy and asked the students if they thought democracy was the best form of government. Everyone had something to say. समस्तंकर पाखरे किछि ना किछि कहिया पई उत्सुकता सब भरिथिल छुआ गुडी को एवं लिंगडो को समाने डेमोक्रेसी ऊपर इतले मंतव्य पई कहछन्ती मैडम विभिन्न प्रकार डिबेटिंग कथा गुडा कहछन्ती डिबेटिंग मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी Yolanda कौन कहूची we live in a democratic country. We read in the previous chapter that all over the world people want democracy. Countries that were not democracies earlier are becoming democratic now. All great people have said nice things about democracy, isn't it obvious that democracy is the best? Do we need to debate this? माने Yolanda कहला कोन कि हम देश होची गणतांत्रिक देश आमे गणतंत्र विषय आमे केते बढ़िया जिंस आमे पढी सारलेनी विभिन्न कंट्री ए गणतंत्र पाया पई बहुत चाहूचंती आ गणतंत्र पई समस्ते बहुत भलो कथा को नै आशावादी अछंती तो आमे एठी आ डिबेट करिया कोनसी प्रश्न उठना बोली वेलंडा कहिछि तापरे तांकिनी कोन कहूची तांकिनी कहूची बट लिंगडो मैम had said we should not accept something just because it is famous, just because everyone else accept it. Isn't it possible that everyone is following a wrong path? माने हमर श्रेणी शिक्षक आगर टिका कर हम कहतले कोनोसी जिंस आमे जदी समस्त चाहउछन्ती आ आमे चाहिबा बोले फिबा समस्त करछन्ती आमे करिया लिखाबा तार सेटा भूल हे पारे तो सब पळे हमको सेटा खराब रास्ता को नै पारे सेति पे हमको सबले तर्क करिया आवश्यक सबले भाबिबा आवश्यक हैला रीजनिंग एबिलिटी दरकार आमे रीजन करिबा कोन पे हमको एटा दरकार सेटा निहाती आवश्यक तापर जेनी कहूची कोन yes it actually is a wrong path. What has democracy brought to our country? More than a half a century of democracy and there is so much poverty in the country. Yes, obviously Jenny pointed out the stinging point for democracy माने जोडा कि हम देशर एक माने ऊपर गोटे बहुत बड़ प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क कोन जे हम देश 50-70 वर्षर स्वाधीन हला परे मध्ये गणतांत्रिक राष्ट्र हला परे मध्ये हमें गरीबी रे अछंती बोली से प्रश्न उठाइछि तापर रिवियांग कोन कहूछि रिवियांग कुछ बट what has democracy got to do with it? Do we have poverty because we are democratic or do we have poverty despite being a democracy? माने रिवियांग कहूछि किंतु डेमोक्रेसी रो इथे कोन पार नेबा देबा हमें जो गरीबी अछंती एटा डेमोक्रेटिक माई डू वी हैव पॉवर्टी डिस्पाइट बीइंग ए डेमोक्रेसी आमे जदी डेमोक्रेसी नथंती कोन आम देश रे गरीबी नथंता ए बडा गोटे मंतव्य से प्रतिपादन करूची तापर जेनी पुनी कहूची whatever how does it make a difference? The point is that this can't be the best form of government. Democracy is all about the chaos, instability, corruption, hypocrisy. Politicians fight among themselves. Who cares for the country? जेनी कहूची मु माने तमे जहा कुहो डेमोक्रेसी को जते भलो कुहो मु मानिया को नाराज कारण ए डेमोक्रेसी रे विभिन्न प्रकार केओस बा विभिन्न प्रकार घटना सब घटी चलछि इनस्टेबिलिटी अछि स्थायित्व नाही हला कोन जिंसर ठीक प्रतिपादित हो नाही सोना करप्शन अछि लोक माने ठकुचंती फंडुल करछन लोकन को हाइपोक्रेसी अछि अपर क्लास लोअर क्लास एबला विभिन्न प्रकार जिंस इठी अछि एवं पॉलिटिशियन माने काम करिया प्रति बदल रे समान जणे अन्य को दोसारोप करछंती जहा कि मते भल लागुनी बोली जेनी होउछि तापर पोइमन कहउछि कोन so what should we have instead go back to the British road, invite some kings to rule this country? पोइमन कहउछि तो आम पाखरे कोन बा अछि कोन आमे ब्रिटिश साम्राज्य को जिबा कि और सेठू किछ राजा को बा किछ शासक को डाकियानी कि हम शासन करिया पे कहि परिया कि तब रोज को I don't know. I think what this country needs is a strong leader, someone who does not have to bother about elections and parliament. One leader should have all the power. He should be able to do whatever is needed in the country's interest. That alone can remove corruption and poverty from this country. माने एठी रोज माने परोक्ष भाबे अरिस्टोटल कर गोटे चिंताधारा को से जागृत करछि कोन अरिस्टोटल कहंती गोटे बडा लागे जदी पढिया को चाहिबो सेते कहिसंती कोन जे गोटे आइडियल मैन हला गोटे फिलोसोफर किंग रो कथा कहंती माने गोटे दार्शनिक राजा
महत्वाकांक्षी राजा जे कि देशर समस्त मंगल करिवो सब क्षमता ता पाखर थिबो से के भी निजर अधोगति विषय चिंता न करिकि सबले अन्य मंगल कथा करिवो सेही कथाड़ को ये टिके इंगित करछि कोन कहिछि मु जाने ना जे केमिति हबो लीडर किंतु लीडर स्ट्रांग हबा कथा इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट रो ए जिंस को से भय न करी देश हित कर काम करिया कथा आ गोटे आम देशर गरीबी करप्शन सब हटाइया पई से दृढ़ परिकल्प हबा कथा बोली कहउछि के रोज तापरे समवन साउटेड जने कहला दैट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप से कहला ताकू डिक्टेटरशिप कहा जाए एकछत्रवाद कहा जाए तो होई कहउछि what if that person start using all this power for himself and his family what if he is corrupt himself जदि सही फिलोसोफर किंग बा जदि सही आदर्शवादी राजा वा शासक जहा बनैबा जे कि हम पय काम करियो ବୋଲି भाबा जदि से निज हित पय काम करिया बसे ता परिवार पय काम करिया बसे ताहाले कोन बा हबो सही कथा भाबो केते टेरिबल सिचुएशन हबो आ से स्ट्रांग आ से लीडर तो भूली जाओ से केते बा करप्ट हे जीव देशटा हम भाबी देखो बोली होई कहिछि जोडा तमे कोन देखिथिले हमें देखिथिले घाना रे हैना तापरे रोज I speaking only of the honest, sincere and stronger leader. तब रोज कोसी जे केवल जने साधु दायित्ववान कर्मठ एवं दृढ़ व्यक्ति बा दृढ़ नेता को चाहे बा कहूची ता विषय बोली कहिला त कोइ कुछ बट दैट इज नॉट फेयर यू आर कंपेयरिंग ए रियल डेमोक्रेसी विथ एन आइडियल डिक्टेटरशिप माने तमे गोटे रियल डेमोक्रेसी को सतसती का गणतंत्र को जने आइडियल जोडा हवा कथा माने आइडियल स्टेट ऑफ वर्ड्स जोडा हम कहते कि एई कथा हवा कथा एमिति हवा कथा that doesn't mean that everything is go according to our thoughts our ideas our novelism माने आमो रास्ता दे सब जिंस जीव बोले माने नै तार हैला माने डेमोक्रेसी आ जो आइडियल डिक्टेटरशिप भीतर तमे जो कंपैरिजन करछो सेटा फेयर न बोली कोइ कहूची we should compare an ideal with an ideal माने हमें करप्शन कहा कहा को गोटे बड़ुआ संगे बड़ुआ को कंपेयर करिया कथा दुर्बल संगे दुर्बल को कंपेयर करिया कथा हैला धावक संगे धावक को कंपेयर करिया कथा हैला आइडियल से तो आइडियल को करिया कथा कंपेयर किंतु द रियल विथ द रियल करिया कथा आइडियल विथ आइडियल करिया कथा डू गो एंड चेक द रिकॉर्ड ऑफ डिक्टेटर्स इन रियल लाइफ दे आर मोस्ट करप्ट सेल्फिश एंड ब्रूटल तमे इतिहास को जाओ एवं देखो केते करप्ट केते सेल्फिश केते ब्रूटल किंग माने अछंती बा केते डिक्टेटर गुडा अछंती तमे जानियो बोली कोइ कहूची इट इज just that we don't get to know about this and what is worse you cannot even get rid of them माने एटा केते बा भयंकर तार से शासन को बाहरीबा केते बा जंत्रणादायक तमे ता पर जानियो तमे तापसे पढिबो न जानि कि एटा कहबा ठीक हबो बोली कोइ कहिछि प्रकृत रे तमे इतिहास को देखिबो बहुत गुडे लीडर थिले जेमिति कि तमरो एडल्फ हिटलर बहुत रिसेंटली हैला तांको जो द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो जाइतला विभिन्न प्रकार एकछत्रवाद जेमिति आछंती तमरो हम प्रथम जे नाकुमा विभिन्न प्रकार लीडर को देखिले जो माने कि एकछत्रवाद रो एक दृष्टांत देखाइछंती कि केभଳି आसे माने निरपुंस शासक हेथिले हैला जेमिति जार शासक गुडी रशिया रो विभिन्न प्रकार जो लुंठनकारी शासक औरंगजेब भारत रो जेति देशर लोकंकर हित न भाबी कि अहितकर काम रे लिप्त रहंती मैडम लिंगडो was listening to this discussion with interest बहुत खुशी रे बहुत शांति रे मैडम सुनछंती छुआंकर बहुत आकृष्टपूर्ण कोटे डिस्कशन को now she stepped in से तापर कहउछंती I was delighted to see you all arguing so passionately I don't know who is right and who is wrong that is for you to settle but I did feel that you all wanted to speak your mind you may have felt very bad if someone tried to stop you or if someone punished you for saying what you felt would you be able to do that in a country that is not democratic is that a good argument for democracy मैडम कहिले कि तमे बहुत बढ़िया युक्ति करछो तर्क करूछो तमे निजर मत को रखिया पई तमे चाहुछो अन्य को दबेबी अन्य को पूर्व मु कहिबी केमिति हैला तमे चिंताधारा को विरोध करले तमे चिंताधारा को तमु खराब लागुछि तमे एक्सप्रेस करि पारुछो ई सब कोठी करछो तमे गणतांत्रिक राष्ट्र भीतर कहि पारुछो तमे भाबो जदि गोटे नॉन डेमोक्रेटिक देश हितांता नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हितांता से तमे बढिया करि पारंत करि पारत नाही तो एटा तमरा डेमोक्रेसी बा गणतंत्र गोटे बहुत बड़ हां वरदान जे तमे डेमोक्रेसी थाई कि डेमोक्रेसी को तमे निंदा मध्य करि परिबो डेमोक्रेसी को आलोचना करि परिबो समालोचना करि परिबो जहा कि को खूब सुंदर जिंस जहा कि तमे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट रे देखिया पाइबो नै बा राजतंत्र बा किंगशिप रे मध्ये देखिया को पाइबो नै argument against democracy तापरे say this conversation has most of the arguments that we routinely hear against democracy एही जिंस गुडी को जोडा में कथा हेबे एटा मुख्यतः साधारण हम देखि थाउ जोडा डेमोक्रेसी विरोध रे आस्थाय let us go to
see these all the things whatever against the democracy. Leaders keep changing in a democracy. मुख्य कथा कौन कहला कि changing leader this lead to instability. प्रथम पॉइंट आसु जे instability थाए माने stability न थाए स्थायित्व न थाए गणतंत्र रे हैला केते सरकार भांगी जाउ थाए तो केते सरकार झुली जाउ थाए सत कथा. Democracy is all about political competitions and power play. There is no scope for morality. Democracy रे केवल power play थाए competition थाए सेठी कोन scope morality बा पूरा ठीक पूरा भूल इडा के भाबी न था केवल निजर क्षमता पई competition पई सामाने आगो कर मोती democracy सत कथा हैला. So many people have to be consulted in a democracy that leads to delay. हैला बहुत लोकंकर कथा को ध्यान रखे पड़े बहुत लोकन सहित बुझामणा करे पड़े जोटा कि कोनसी गोटे प्रोसेस रे कोन धीरता आसी थाए मनकर गोटे पोलो बांधिवार अछि पोलो को हम गोटे नदी पर पोलो बांधिबा सेही पोलो बांधिया पई हमें सेही नदी पाख दुई पार्श्व थिबा गां हैला सेही पर्यावरण सेही नदी रो ऊपर सरकार जो कर्तृत्व सब परमिशन हैला एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल थार परमिशन विभिन्न प्रकार एनजीओस ता अगेंस्ट जे कोर्ट को विभिन्न प्रकार प्रोसेस आसीबो जोटा कि डेमोक्रेसी अलाउ करे जहा फले कि प्रोसेस डिले हुए हैला. तापरे elected leaders do not know the best interest of people. It leads to a bad decision. माने elected जो मानको हमें निर्वाचित करबी पठाती से माने लोक मानकर कोडा महत् उद्देश्य पूर्ण करिवो बा लोक मानको भलो काम करिवो सेटा न भाबी कि से माने बहुत खराब उल्टा डिसीजन नियंती जा फले कि लोक माने प्रभावित होंती सेटा भी गोटे बड़ जिंस कि bad decision making डिले डेमोक्रेसी हला ए भले जिंस. तापर कोन देखिबा हमें democracy leads to corruption for it is based on electoral competitions. माने democracy leads to corruption को बढ़ावा देते कौन पाई जो election होता है the process of elections lead to corruption because our country is having a past history of this kind. माने यही corruption रो गोटे लंबा चिठा हम देश रे अछि केते corruption हेछि केते प्रकार scam हेछि जोटा कि electoral competition जोटा कि बाध्य करछि ईवीएम रो इन्वॉल्वमेंट पाई वीवीपैट रो संयुक्ति पाई विभिन्न प्रकार जिंस हमें देखिबा. Ordinary people do not know what is good for them. They should not decide anything. माने साधारण लोक ordinary people do not know what is good for them. माने करो माने मूली मजरिया गोटे दिन श्रमिक से कोन निजर खाइबा एवं निज परिवार विषय भाबियो ता पई कोन फुल कोन ठीक से निज काम रे ही देखे तो सी केमिति बा जानिबो सरकार जहा कहउछंती ठीक ना तो इथिरे ordinary people दा बहुत affected रहे सेटा मते गोटे कोन problematic thing democracy ro. Are there some other argument against democracy that you can think of? तुमे आहुरी भाबी पारिबो कि democracy रो कोन खराब अछि. Which of these arguments applies mainly to democracy? Who argument ki mainly apply democracy? Which of these can apply to misuse of any form of government? Which of these do you agree with? माने एमान को भीतर कोडा तुमको एग्री होचो को वाला फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तुम मिसयूज हुए बा कोन थाए ई सब जिंस हम देखिले बा जानिले बा तुमे आहुरी अधिक बुद्ध जानि दे पारो. Clearly एतो बडी जिंस आसुची कोन democracy is not a magical solution for all the problems हैला एटा गोटे panacea नो it's not a panacea it's just a कोन माने एटा होच गोटे आयुर्वेदिक औषध हैला माने एटा केवल हमर बहुत गोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करि पारे किंतु सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करि पारे नि माने ये सब भोक मारि पारे किंतु माने एई भोकरे तुम समस्त तृष्णा मेंटि पारिबो किंतु तुमरो चाहिदा जो आहुरी एटा आस्ते आस्ते हबो सब एका संगे मेडिकल सॉल्यूशंस बढिया हबो नै. तो clearly democracy is not a magical solutions for all the problems. It has not ended poverty in our country and in other parts of the world. It has not ended poverty in our country. ये हम देश रे गरीबी हटाई नै. Also it's not ended the poverty in other part of the world. पृथ्वी रे मध्ये अन्य कोनोसी देश रे ये गरीबी हटाई पारि नाही हैला. Democracy is a form of government only ensure that people take their own decision. Democracy बा गणतंत्र गोटे सरकार हिसाब रे लोकन को कोन एन्श्योर करे जे केमिति लोकन को पई गोटे भलो महत् उद्देश्य रे गोटे डिसीजन ने हेबो सेटा देखि थाए. This does not guarantee that their decisions will be good. से माने एटा गारंटी कर न थांती बा कहि न थांती जे आमे जो निर्णय नोचु सेटा केवल तो पई भलो बोली. People can make mistakes. Involving the people in this decision does not lead to delay the decisions making. हैला does lead to the decision making. डिले करिया रे एरा प्रमुख भूमिका रखते कोन पई
democracy thinks about people and people make decisions for democracy. That's why the process of delaying is started. बा process of delaying टा start ही था. It is also true that democracy leads to frequent changes in leadership. ହେଲା ଏଟା ସତ ପ୍ରଶ୍ନ ଲିଡର ମାନେ ଅନଷ୍ଟେବଲ ଥାନ୍ତି ଷ୍ଟେବଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନ ଥାଏ ସତ କାରଣ ଡେମୋକ୍ରେସି ଫ୍ୟାସିଲିଟେଡ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି ରେଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ. Sometimes this can set back big decision and affect the government's efficiency. ଅବଶ୍ୟ ଏଟା କେତେବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଆଉ ସରକାରରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷକୁ ଏଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ. ଏଫିସିଏନ୍ସି ସରକାରଙ୍କ କାମ କରିବା ଶୈଳୀକୁ ଏଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ. ମନେକର ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଶର ଝୁଲା ଶାସନ ଥାନ୍ତା କଣ ହୁଅନ୍ତା ସରକାର ଯାହା ଚାହାନ୍ତେ ବିଲ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତେ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳମୟ କାମ ହେଇପାରନ୍ତାରେ. ଏବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବଲ ସରକାର ଚାଲିଛି ତ ସେ କଣ କରିବ ଦେଶର ଯେତିକି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ ସେ ଭାବିବ ମାନେ ମନେକର 1000 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ ସେଇ କଥା ଭାବିକି ସେ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବ ଯୋଉଟା କି ସେ ଇଜିଲି କରିପାରିବ କାରଣ ତା ପାଖରେ ସଂଖ୍ୟା ବଳ ଅଛି. ତ ଯେତେବେଳେ ଝୁଲା ଶାସନ ରହିବ ସେଟବେକିଂ ଲିଡରସିପ ରହିବ ଯେତେବେଳେ କମ ସଂଖ୍ୟକ ନେତା ଥିବେ ଗୋଟେ ଦଳର ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଏଫିସିଏନ୍ସି ହିସାବରେ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କର ୱାର୍କ effect habo hala. These arguments show that democracy of the kind we see may not be the ideal form of government, but that is not a question we face in real life. The real question we face is different. Is democracy better than other form of government that are there for us to choose from? माने एठी हमर प्रश्न एटा उठिनी जे स्टार्टिंग हम प्रश्न एटा उठिना कि डेमोक्रेसी केते आइडियल न नुह केते ठीक बा केते भूल हमें सेटा देखुना आमे देखुछु जे डेमोक्रेसी संगरे अन्य सरकार गुडी को डेमोक्रेसी तुलना केते भलो बा केते खराब एटा देखुछंती. तो सेही जिंसटा मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न हला आवर मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न इज द डेमोक्रेसी विथ अदर कंट्रीज governing policies or governing systems like communism and autocratic form different kind of form of governments we are going to catalog them माने हमें तांको जाउछंती कोन तुलना करिबा. arguments for democracy माने डेमोक्रेसी पाई हमें कोन आर्गुमेंट करिबा बा कोन ता हितरे बा डेमोक्रेसी कोन भलो सेटा देखिबा. China's famine of 1958 to 1961 was the worst recorded famine in the history. माने इतिहास रो सबरो दुर्दिनपूर्ण भूखमरी बा तमन लोकन खायक पांथि नै हला सेही जिनसडा कबे हेतिला 1958 1961 पर्यंत हला. तो nearly 3 crore people died in this famine. एही दुर्भिक्ष रे पाखा पाखी 3 कोटी लोक मृत्युवरण करथिले. During those days India's economic condition was not much better than China. India's economic condition was not much better than China. माने सेही समय रे आम देशर अर्थनीति मध्य चाइना थारो अधिक ल नथिला. Yet India did not have a famine of the kind China had. China भलिया दुर्भिक्ष आम देश केबे देखि नाही. Economists think बा इकोनॉमिस्ट बा तमर अर्थनीतिज्ञ माने भाबंती कोन that this was a result of different government policies in the two countries. इकोनॉमिस्ट बा अर्थनीतिज्ञ माने भाबंती कोन जे दुई देश मध्ये रे जो सरकार रो फरक अछि हम से गणतंत्र ता देश रे कम्युनिस्ट सरकार ए सरकार फरक पड़े ए जो मैनेजमेंट आ जो देशर ग्रोथ कथा आछी सेटा फरक अछि. The existence of democracy in India made the Indian government respond to food scarcity in a way that the Chinese government did not. माने हम सरकार डेमोक्रेसी थिबारु लोक को हित भाबु थिबारु सी जो फूड स्कार्सिटी होबो नाही बा खाद्य अभाव होबो नाही बोली काम करथाय किंतु चाइनीज गवर्नमेंट से ता लोकन को पई भाबी न थाय सेति ता देशरे से भूखमरी बा सेही भलिया गोटे दुर्भिक्ष देखिया पड़िथिला. They pointed out that no large scale famine has ever taken place in an independent and democratic country. हला एटा कोन पॉइंट आउट करूची जे आमो भलिया गणतांत्रिक राष्ट्र रे केबे भी जे भलिया दुर्भिक्ष देखु मिले नाही कारण सरकार सब बेले लोकन को पई काम करि थाय. If China too had multi-party elections and opposition party and a press free to criticize the government, then so many people may not have died in famine. The China रो आखरे एमना ଗୋଟେ प्रेस थाता जे कि गवर्नमेंट मना करि पारंता कहि पारंता जुक्ति करि पारंता गवर्नमेंट सहित एमि ଗୋଟେ पार्टी थाता जे कि तांकर नेशनल असेंबली रे गवर्नमेंट रो खिलाफ रे कहि पारंते बा तमे एटा भूल करछो एटा ठीक करो नीति परिवर्तन करो एबा किछि चाइना रे नाही जहा पर कि लोक मानकर मृत्यु हि गला 3 कोटी अधिक तांकर गोटे दुर्भिक्ष रे बा फेमाइन रे. This example bring out one of the reason why democracy is considered the best form of government. एही क्वेश्चन टा बा एही एग्जांपल टा हमको गोटे बहुत बड़े उत्तर रे प्रतिपादन कला जे आम सरकार बा आम जो गणतांत्रिक प्रक्रिया दी
उपरी बा सबुठ भल कारण चाइना को आम देखिले गोटे कम्युनिस्ट नेशन रे केवल लोक मरीगले पोकमाछी भाया 3 कोटी लोक भाई पारुछ 3 कोटी लोक आम ओडिशार टोटाल जनसंख्या पाखापाखि 7 कोटी तो 3 कोटी माने अधा ओडिशा मरिबा भाया democracy is better than any other form of government is in responding to the need of the people हला लोक मानकर चाहिदा लोक मानकर काम करिया पई डेमोक्रेसी सबक उन्नत मानर गाड़ी माने आमे जेते मानकर आमे कहबा कि ना बाइक रे गले चार चक्का यान रे गले कोन होउची जे प्रदूषण होउची धुआं बाहरुची हला आउ हमर कोन सोसाइटी पई ठीक न हमर परिवेश पई ठीक न ताले कोन आमे सगड़ गाड़ी रे यात्रा करिबा ताले कोन आमे सगड़ गाड़ी रे यात्रा करिबा कि आमे बॉम्बे जिबार थिबो कि दिल्ली जिबार हम सगड़ गाड़ी रे जिबा ना मोटर गाड़ी रे जिबा जदि बा मोटर गाड़ी खराब होई ताने हेले भी हम मोटर गाड़ी जिबा कारण समय पैसा सब दृष्टि रखले मोटर गाड़ी ही आगुआ हो ठीक से भया डेमोक्रेसी जेते भी खराब है ओना काई कि कम्युनिस्ट थारू हला ऑटोक्रेटिक थारू बहुत भलो एटा मको बुझिबा को पड़िबो बुझेला तो कत ज्ञान आस्तले में हां ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मेक एंड कैन रेस्पॉन्ड टू पीपल्स नीड्स हला माने ए नॉन माने से चाहे करिवो बा न करिवो सेटा किसी गारंटी नाही जोडा गणतंत्र थिबो बट ऑल डिपेंड्स ऑन द विश ऑफ द पीपल हु रूल सबले कोन हुए जो जे शासन करथाय ता ऊपर निर्भर करिवो जे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थिबो हला जे शासन कर तार विश ऊपर इफ द रूलर्स डू नॉट वांट टू दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल समान यदि चाहिबे करिवे न चाहिबे करिवेनी ताकर विश ऊपर निर्भर करिवे तले सरकार नॉन डेमोक्रेटिक हिथिबो हला ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिक्वायर्स दैट द रूलर्स हैव टू अटेंड द नीड्स ऑफ द पीपल गणतांत्रिक राष्ट्र रे लोक कोनबे लोक मानकर ख्याल रखे पड़िबो जेमिति कि केरला रे गोटे फ्लड चलची बहुत डिवास्टेटिंग फ्लड जोथि बहुत लोक अफेक्टेड हेचंती बहुत लोक मरिचंती सेते सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट आगु आछंती हला उसमने कोन करचंती कहिसंती ना we have to help you we have to take you out from this kind of crisis हला माने सरकार आगतुरा पळे आसीबो लोकन सहाय्य पाई किंतु एडा कम्युनिस्ट किबा अन्य सरकार एबडा देखिया को मिल न थाए ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए बेटर गवर्नमेंट बिकॉज़ इट इज ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक सरकार कोन पाई कारण एटा मोर अकाउंटेबल प्रसिद्धि में ये बहुत भलो अन्य अपेक्षा ये लोकन पाखरे उत्तरदायी अकाउंटेबल उत्तरदायी हला सेति पई एटा बहुत बढ़िया There is another reason why democracy should lead to better decisions than any non-democratic government. Democracy is based on consultations and discussions. A democratic decisions always involve many persons, discussions and meetings. When a number of people put their head together, they are able to point out possible mistakes in any decisions. This takes time, but there is a big advantage in taking time over important decisions. This reduce the chances of rashes responsible decisions माने जिते शासन करे हला जिते निष्पत्ति ना पई बहुत लोक आसंती विभिन्न प्रकार मत रखंती विभिन्न प्रकार मत रो अपर मत को देखंती सेतले समय गोटे फल बा ठीक डिसीजन रे पहुंची थांती बा गोटे सठिक निर्णय रे पहुंची थांती आउ गोटे गोटे कोन परिवर्तनशील समाज गठन कर थांती किंतु अपर पक्ष यदि जने व्यक्ति किमा दी जने व्यक्ति शासन करथबे बा गोटे समूह शासन करथबे सेठी कोन हबो सेठी अस्थिरता बा भूल डिसीजन नबार चांसेस बढ़िबो सेति पे कहा गला कोन दस डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग सेति पई निर्णय नेबा क्षमता को मध्य डेमोक्रेसी बढ़ाई थाए प्रथम हम कोन देखले अकाउंटेबिलिटी देखाई थाए हला आपण हम देखुचंती कोन डिसीजन मेकिंग पावर मध्य भलो होई थाए डिसीजन मेकिंग this is related to the third argument also that democracy provides a methods to deal with different conflicts हला conflict to solve मध्य कर थाए conflict to solve माने कोन माने जति खराब जिंस हटाइबा पई conflicts हटाइबा पई ये democracy काम करि थाए in a society people are bound to have differences of opinions and interested these differences are particularly sharp in a country like our which has an emerging social diversity. People belong to different regions, speak different languages, practice different religions, and have different castes. They look at the world very differently and have different preferences. माने आम देश बढ़िया देश रे कोनते भिन्नता भीतर एकता अछि हम देश रे हैला माने हम देश बहुत भिन्नता अछि कोन भिन्नता माने भाषा को नेकी भिन्नता धर्म को नेकी भिन्नता हैला तापरे रहिबा जागा को नेकी भिन्नता तापरे जीवन दिनचर्या को नेकी भिन्नता हला कथा को नेकी भिन्नता मतवाद को नेकी भिन्नता माने
विभिन्नता भितर एकता आम देश हूँ गोटे उत्कृष्ट उदाहरण तो ये देश दे लुक एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस ये देश जगह पृथ्वी को विभिन्न प्रकार नजरिया देखी था प्रेफरेंसेस पसंद अलग अलग होता है the preferences of one group can clash with those of other groups माने गोटे दल लोकंकर प्रेफरेंस बा इच्छा अन्य मानकर अलग आही पारे how do we resolve such a conflict हमें से भला कॉन्फ्लिक्ट केमिति समाधान करिबा the conflict can be solved by brutal power which ever group is more powerful will dictate the terms and others will have to accept that माने जोठी संख्या गरिष्ठता थिबो जोठी अधिक लोक थिबे से माने अन्य संघ उपरे प्रभुत्व जाहिर करिवे हला जोटा कि डिक्टेटोरियल रिजिम भलिया हबो but that would lead to resentment and unhappiness ताहा दुख एवं कोन गोटे डिवास्टेटिंग सिचुएशन को नै कि जीव सेति पई गोटे भलो नुह different groups may not be able to live together for long in such a way democracy provides the only peaceful solution to this problem ए भलिया सिचुएशन को डेमोक्रेसी सॉल्यूशन देता है ये भलिया सिचुएशन को डेमोक्रेसी तमरा गोटे सॉल्यूशन देता है केमिति इन डेमोक्रेसी नो वन इज ए परमानेंट विनर डेमोक्रेसी से केही जणे परमानेंट विनर न थाए बा समस्त केही सबले जिति न थाए हला केतले से बा केतले जणे परमानेंट लूजर न थाए इन डेमोक्रेसी नो वन परमानेंट लूजर और विनर हला डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विथ वन अनदर पीसफुल विभिन्न प्रकार ग्रुप जणे आउन पाखरे शांतिपूर्ण भाव रहि थांती इन ए डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर गणतंत्र आम देश रे एकतार सूत्र रे मानता है गणतंत्र गोटे सूता ये केही देश लोक बा फूल मानकू गोटे सूत्र रे बांधी थाए हला these three arguments were about the effects of democracy on the quality of government and social life but the strongest argument for democracy is not about what democracy does to the government it is about what democracy does to the citizen माने गणतंत्र केते सरकार कला केते केमिति सरकार तयारी कला केमिति सरकार चलला एटा रे मतलब रखे नै गणतंत्र लोकंक पई मतलब रखे डेमोस हला डेमोस मा लोक मानक पई से काम करथाय से लोक मानकर ख्याल रखी थाय even if democracy does not brings about better decisions and accountable government it is still better than other form of government हला डेमोक्रेसी जदी गोटे भलो डिसीजन बा न आनी थाउ अधिक अकाउंटेबल मध्ये न होई थाउ हला किंतु ये अन्य सरकार तारु भलो कारण डेमोक्रेसी एनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स डेमोक्रेसी सबले तार लोकन को पई ध्यान रखे लोकन को पई मंगल काम करथाय as we discussed above democracy based on the principle of political equality or recognizing that the poorest and the least educated has the same status as the rich has the educated poor are not subjects of a ruler they are the rulers themselves people are not subjected of ruler they are the ruler themselves even when they make mistakes they are responsible for their conduct माने डेमोक्रेसी रे धनी गरीब उच्च नीच सब नथाय समस्त निजर कर्म पई दायी हे थांती जे भलो काम कला से एप्रिसिएशन पाइबो ये खराब काम कला अकॉर्डिंग टू लॉ अकॉर्डिंग टू द कंडक्ट दे विल पनिश्ड और डिबार finally democracy is better than other form of government because it allows us to correct its own mistake हला डेमोक्रेसी आ गोटे पई भलो कोन पई ये जोटा डेमोक्रेसी खराब हेते मनकर एबे गोटे सरकार चल जे से गोटे खराब काम कला जोथि पई से तार शासन गादी भी हटि गला अन्य सरकार से सही खराब को सुधारिबो जोटा कि डेमोक्रेसी हि देखिया को थाए हला द गवर्नमेंट्स करेक्ट्स इट्स ओन मिस्टेक जे को सुधारी थाए एटा होची डेमोक्रेसी रो को बहुत उद्देश्य बहुत लक्ष्य साधन as we saw above there is no guarantee that mistakes cannot be made in democracy no form of governments can guarantee that the advantage in a democracy is that such mistakes cannot be hidden for long there is a space for public discussion on this mistake and there is a room for corrections माने जोथिले एमिति कोनसे सरकार नाही जे कि भूल करेनी समस्त भूल करंती मानव मात्र के हला भूल करे थांती किंतु से भूल सुधारी बाटी छि प्रकृत मनुष्य कोनिया ठीक से बलिया जो सरकार से भूल को सुधारी की लोकन पॉइंट किछि काम करिवो किछि डिसीजन नबो से ही भलो सही भलिया सरकार छि डेमोक्रेसी हला जोठे कि करेक्शन बा ठीक हबा पई मिस्टेक को ठीक करिया पई एठी रूम थाए बा स्थान थाए either the ruler have to change their decisions or the ruler can be changed डेमोक्रेसी कोन बढ़िया कथा डी कहला ये रूलर हैव टू चेंज देयर डिसीजन मनकर मोदी गोटे खराब डिसीजन नेले जे मु कोन करबी देशर सब लोकन पाखरु 2000 टका कलेक्शन करी हला माने लोकन आर्थिक अवस्था कोड दुर्बल कला मानकर पैसा नथले लोक कोठाणी के दबो
तो खराब डिसीजन मन कर तो जदि मोदी शासन नियम को न हटैला न हटैले सॉरी न हटैले तार कोन हबो और द रूलर्स कैन बी चेंज्ड माने मोदी को हटाई दिया हबो कारण जदि मोदी एई बढिया नियम आनले जोटा कि लोक मान पर ठीक हो ता लोक माने ताकू को समय हराइबे इलेक्शन को वोट देबे सेति पई सरकार कोनोसी भी सरकार हो से मोदी गवर्नमेंट हो बा मनमोहन गवर्नमेंट हो they always look for the benefits of the people otherwise they will judged or voted accordingly है ना से माने वोट पाइबे this cannot happen in a non democratic country एई बडा जिंस non democratic country रे हुए नहीं राजा जदि थरे कहिदला सुली रे चढ़ाइबो राजा थरे कहिदला संपुरिया राजा माने संपुरी शहर अछि राजा थरे कहिदला कि जाओ ता से पक्का घर बनैछि तार पैसा नै आस्तले ए बडा कि मोदी सरकार करि परिबे नै बा हमर एई गणतांत्रिक नवीन सरकार करि परिबे कारण लोकंको पई समाज भाबी थांती लोकंकर मंगल करि थांती लेट अस सम इट अप जेतिके पढिले हामी चलो समाप्त करिबा democracy cannot get us everything and is not the solutions to all problems but it is clear better than any other alternative that we know it offers better changes of a good decisions it is like to respect people's own wishes and allows different kinds of peoples to live together even when it fails to do something of these things it allows a way of correcting mistakes and offer more dignity to all citizens that is why democracy is considered the best form of government माने गणतंत्र को कोन पई मुख्य फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा why democracy is called the best form of government because it solves maximum problem है ना it cannot solve every problem but it solves maximum problem है ना but how gonna it respects people है ना it respects their wishes it allows living together it's ये विभिन्न प्रकार काम करता है इट्स करेक्ट्स इट्स मिस्टेक माने जो भूल काम सरकार करता है ताको सुधारी थांती हैला इट्स अलाउज डिग्निटी ऑफ सिटीजन जनता मानकर डिग्निटी को ये कर थांती एवं सेथि पई एही सब कारण रो ई सरकार बहुत भलो तापर देखिबा एठी कोन कहिछि this cartoon was published in Canada just before the parliamentary elections of 2004 हैला everyone including the cartoonist except the liberal party to win once again when the results came the liberal party lost the elections its cartoons are argument against democracy or democracy माने हमरो कनाडा बोले देश अछि अमेरिका रो ऊपर है ना एटा उत्तर अमेरिका रो गोटे देश सेठी इलेक्शन पूर्व एटा गोटे कार्टून ए कोन कहउछन्ती ए मासय we voters are angry and we are not going to take it anymore हला हम रागी जेछु बाबू हमें याकू शासनता देबु नै the liberals have been arrogant they are broken our trust in governments they stole our money so on June 28 we are going to be do the Canadians do best we are going to vote them back in है we are going to vote them back in माने जो सरकार रो विरोध रे एटा रे कार्टून करो सरकार रो नीति को नेकी यांकर मत एटा रे तमे बुझी पारथबो हला रमेश एंड मुजाफर read an article it showed that no democracy has ever gone to war with another democracy wars take place only when one of the two governments is non-democratic the article said that this was a great merit of democracy after reading the essay Rajesh and Muzaffar had different directions Rajesh said that that this was not a good argument for democracy it was just a matter of chance it is possible that in future democracy may have wars Muzaffar said that it could not be a matter of chance democracy take decisions in such a way that it reduces the chances of war which of two positions do you agree with and why देखो बहुत बड़ा जिंस कहला राजेश मुजाफर जिंस पढिले बा विभिन्न प्रकार पांच ट्रैक देखिले जो जानिले कि डेमोक्रेसी कंट्री केवल डेमोक्रेसी सहित युद्ध करे नै युद्ध होइछि तो का सहित नॉन डेमोक्रेटिक सहित करछि बा डेमोक्रेसी नॉन डेमोक्रेटिक सहित एमिते एकटा आइछि कोन भाई मुजाफर कहउछि जेटा गोटे मैटर ऑफ चांस माने गोटे एटा हेइनि किंतु आपको हेइ पारे किंतु राजेश कहउछि ना एबडे हापनि कारण डेमोक्रेसी सरकार लोकन पई अधिक चिंता करथि सेति पई ताकर लोकन पई केमति युद्ध न हो लोक केमति फलसे न सेटा भाबी थाए तमे कोटा एग्री हला सेटा हो तापर हमें देखिबा ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी कोन सेटा ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एबे हमें देखिबा कि डेमोक्रेसी रो गोटे ब्रॉडर बा गोटे लार्ज स्केल तार मीनिंग देखिबा केमति हला in this chapter we have considered the meanings of democracy in a limited and descriptive sense we have understood democracy as a form of governments this way of
defining democracy help us to identify a clear set of minimal features that democracy must have. The most common form that democracy takes in our times is that of representative democracy. You have already read about this in the previous classes. In the countries we call democracy, all the people do not rule. A majority is allowed to take decisions on behalf of all people. Even the majority does not rule directly. The majority of people rules through their elected representative. हला नाटी कोन कहला कि हमें देखिले हला दीटी चैप्टर रे हमें डिस्कस माने प्रथम एई चैप्टर मिसे कि देखिया जदी डेमोक्रेसी विषय हमें बहुत ज्ञान लाभ कर सारछंती, डेमोक्रेसी कोन बुझी सारछंती। तो हमें आउट जिंस देखि छंती डेमोक्रेसी रे कोन हिताए वोट पाई कि लोक आसंती माने लार्जर पीपल उनकर पाई स्मॉल पाई रो काम करथांती बा से माने गोटे श्रेणी रो आसी कि आ गोटे श्रेणी को रिप्रेजेंट करथांती एवं से माने विभिन्न प्रकार डिसीजन नै थांती हला। तो दिस बिकम नेसेसिटी बिकॉज़ कोन पाई एरा नेसेसरी बा कोनडा आवश्यकता। Modern democracy involves such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision। माने निहात सत कथा हमर जनसंख्या 140 कोटी पाखा पाखी। तो ए बडा गोटे जनसंख्या एकाठी बसी डिसीजन नबाटा केबे भी संभव न सति पई इलेक्शन हवा बा हम भीतर प्रतिनिधित्व हवा निहात जरूरी। Even if they could, the citizen does not have the time, the desire of skill to take part in all decisions। हला जदी बा सरकार चाहिबो एटा तो लोक माने चाहिबेनी कारण कार इच्छा न थाए हला कि स्किल न थाए बा कि जानि न थाए कि केमिति डिसीजन नै केमिति लोक पई काम करा जाय। This gives us a clear but minimal understanding of democracy। This clarity help us to distinguish democracy from non-democracy हला, but it does not allow us to distinguish between a democracy and a good democracy। ए जो दुईटा पॉइंट माने डेमोक्रेसी गोटे जगह समस्त सब लोक बसी कि डिसीजन ना संभव हो बनाई, सब लोक चाहिबे भी नाही, समस्त पाखे क्षमता भी नाही से बडा डिसीजन ना पाई। एटा हमको कोन डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी रे अंडरस्टैंड बुझिया में हेल्प कला, किंतु हमको एटा कोन पाई डेमोक्रेसी भलो डेमोक्रेसी बा भलो गणतंत्र बा खराब गणतंत्र भितर छि फरक देखाइला नाही। It does not allow us to see the operations of democracy beyond government। For this we need to turn to broader meaning of democracy। सेते हमको जेहेतु ये भलो कोन खराब कोन डेमोक्रेसी रे कि भलो डेमोक्रेसी कोडा हवा कथा कोडा ठीक डेमोक्रेसी और कोडा आहुरी ठीक हबो केमिति बा डेमोक्रेसी कोन आ भलो डेमोक्रेसी कोन ता भीतर कोन सेटा में आपको देखिबा केमिति broader meaning बा तार broader बा बहुत विस्तृत meaning देखिबा कोन। Sometimes we use democracy for organizations other than the government। Just read these statements कोन। We are a very democratic family। Whenever a decision has been taken, we all sit down and arrive at a consensus। My opinion matter as much as my father's। जने कोची हम घर बहुत गणतांत्रिक हिसाब हम चल थाउ, हम समस्त डिसीजन रे वैल्यू रखू, मोर कथा मध्य मो बापा को कथा बढिया बहुत रखे। I don't like teachers who do not allow students to speak and ask questions in the class। I would like to have a teacher with democratic temperament। हला माने ये कोची कि मो से बडा टीचर को पसंद करने जे कि प्रश्न पचरिया पई किबा कहिया को मौका देना थाती। मो कमंती टीचर चाहे मो चाहे कि जे समस्त को मौका देते समस्त कथा सुनते से टीचर। One leader and his family members decided everything in this party। How can they talk of democracy? हला बोले हम से गोटे बहुत पार्टी अछि जोथरे कि गोटे फैमिली हला से पार्टी को चलै थाए। तो सेही से कोन सब डिसीजन से फैमिली नै थांते। हमें केमिति कहि परिबा जेटा माने गणतांत्रिक राष्ट्र रो मूल्यबोध को बुझिबे, गणतंत्र को फल से चलेबे हला। ए बडा तीन स्टेटमेंट हम एठी देखिले। दिस वे ऑफ यूजिंग ए स्टेटमेंट को अप्रूव हमें लक्ष्मण कर कार्टून देखिबा हला। कार्टूनिस्ट लक्ष्मण बहुत फेमस कार्टूनिस्ट इंडिया रो आरके लक्ष्मण। These famous cartoons by आरके लक्ष्मण commented on the celebrations of the 50 years independence। 50 वर्ष गणतंत्र उपलब्धि को दर्शाया पई। How many images of the wall do you recognize? Do many common people feel the way the common man in this cartoon हला। common man रो पिक्चर एठी डेमोक्रेसी देखाई छी। यूनिटी, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, पार्टी देखो हला विभिन्न प्रकार नेतांकर फोटो एठी लागे छी हला। तापरे यूनिटी, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रोसेस, ट्रेड, फॉरेन कोलैबोरेशन, एक्सपोर्ट हला विभिन्न प्रकार जिंस एठी लिखाई छी तुम देखि जानि परिबो हला। विभिन्न प्रकार नेता जे तुम सोनिया गांधी बडा लागु छी, विभिन्न प्रकार नेता विभिन्न प्रकार छवि हला हमर मन को की उठी आसे। यो 50 वर्ष रे हला की केम शासन करिसंती चाचाजी ठुआर मुकुल सरदार विभिन्न प्रकार लोक केमिति अटल जी हला विभिन्न प्रकार के लोक केमिति हमर सब शासन करी की आ को नैचंती सेटा
15 glorious years हमें देखछन देखिए के हम देशको आगे नहीं छन कि भलो पानी पियाइछि देशको तो के ग्रीन रेवोल्यूशन लाइछि के देश रे युद्ध रे विजय देश देइछि हम देशको विभिन्न प्रकार काम विभिन्न लोक करछथि एटा एठी कॉमन मैन को केमते इफेक्ट करछि हम देशर 50 वर्ष गणतंत्र विभिन्न नेता मान मध्य रे एठी तमरा लेखा माध्यम में देखैछि हला these ways of using of the word democracy go back to its basic sense of method of taking decision. Method of taking decision. A democratic decisions involve consultations with the consent of all those who are affected by that decision. Those who are not powerful have the same say in taking the decisions as those who are powerful. Hala, mane those who are not powerful, जो माने शक्तिशाली होती, same have the same say in taking the decision all as those who are not powerful. माने जा पाखरे क्षमता थाउ बा न थाउ जा पाखरे क्षमता थाउ कि न थाउ समस्त समान क्षमता थाए डिसिजन नवार समस्त समान माने निष्पत्ति नवार अधिकार थाए कोडी गणतांत्रिक राष्ट्र रे this can apply to governments or a family or any other organization एटा विभिन्न प्रकार organization को मध्ये इफेक्ट करि थाए thus democracy is also a principle that can be applied to any sphere of life हला माने डेमोक्रेसी हम जीवन र विभिन्न अंग को विभिन्न पॉइंट्स को विभिन्न कोऑर्डिनेट्स को टच करे थाए जोटा कि विभिन्न स्थान रे डेमोक्रेसी उभरी आस्ता है sometimes we use the word democracy not to describe any existing governments but to set up an ideal standard that all democracy must aim to be हला ideal standard कोन सेटा देखिबा true democracy will come to this country only when no one goes hungry to bed हला true democracy बा good democracy केमति आसबो जतरे केही बकरे सोइबे नाही in a democracy every citizen must be able to play equal role in decision making. For this, you do not need just an equal right to vote. Every citizen need to have equal information, basic education, equal resources, and lot of commitments. माने democratic और गणतांत्रिक राष्ट्र रे केवल माने भोकर सोइबाठू अधिकार होई कोन कि लोक माने समस्त डिसीजन नै पारुथिबे समस्त विभिन्न प्रकार जिंस को एसेस करि पारुथिबे समस्त मागणा एजुकेशन पाइ पारुथिबे विभिन्न प्रकार जिंस जहा चाहुथिबे तार इन्फॉर्मेशन पाइ पारुथिबे ताहाले हामी डेमोक्रेसी कहि परिबा तापर कोन if we take the ideal seriously or democracy then no country in the world is a democracy यदि हमें डेमोक्रेसी रो आइडियल को नबा बा डेमोक्रेसी रो माने प्रतिटी कथा को सठिक हिसाब रे देखिबा आ टिक करिया टिक मार्क लगाइबा ताहाले पृथ्वी कोन देश सब टिक डेमोक्रेसी रो जति की टिक हबा कथा सब टिक को क्लिक करि परिबे नै को देश रे भलो स्वास्थ्य देउ पार नथिबो को देश एजुकेशन देइ पार नथिबो को देश खाइबा को देइ पार नथिबो को देश भलो सुरक्षा देइ पार नथिबो लोकन बा को देश निज लोकन सुरक्षा बा निज लोकन को ठीक से रखु नथिबो विभिन्न प्रकार कमी आसुथिबो तो सेति पई जते कोनसी राष्ट्र भला नाही जे कि डेमोक्रेसी रो प्रतिटी पदवाच्य को सफल करूसी हला यदि तार सफल कला तले से एई बला देश जदि आसिला पृथ्वी को सेही देशर पृथ्वी रो सब उच्चतम बा सर्वश्रेष्ठ देश हो बोली कहिले अछुति हो नाही yet an understanding of democracy as an ideal reminds us of why we value democracy ideal माने कोन आदर्श कोन पे हम रखू हमकु उन्नत करिया पई हमकु आहुरी भलो करिया पई हमें हमरो आदर्श रखु थाउ हला ता भले हवा पई it enables us to judge an existing democracy and identify its weakness हमर भितरे कोन खराबी अछि कोन weakness ताकु डिफाइन करिया पई हमें आदर्श बा ideal state of democracy को देखि थाउ it helps us to distinguish between a minimal democracy and a good democracy एटा हम बहुत हेल्प करता है मिनिमल डेमोक्रेसी कम डेमोक्रेसी रो भलो डेमोक्रेसी को दर्शाई थाए in this book we do not deal much with this expansion notions of democracy our focus here with some core institutional features of democracy as a form of government next year you will read more about a democratic society and ways of evaluating our democracies and at this stage we just need to note that democracy can apply to many spheres of life and the democracy can make any decisions in many forms there can be various ways of taking decisions in a democratic manner as long as the basic principles of consultations of an equal basis is accepted the most common forms of democracy in the today's world is rule through people's elected representative माने ये जो डेमोक्रेसी विषय जति पढले हमें बहुत पढिछन तो पई परवर्ती श्रेणी डेमोक्रेसी को आउ तमे जानिबो हला एथे हमें एतिक जानिबा जे केति इंस्टीट्यूशन अछंती जो माने डेमोक्रेसी को इफेक्ट करंती हला केमिति लोक माने रिप्रेजेंट करंती ई सब जो समय पढिबा को we shall read more about that the chapter in chapter 4 but if the community is small there can be other ways of taking democratic decisions
all the peoples can sit together and take decision directly like Athens village hala Athens je bada agare hotla this is how the gram sabha should work in village. Can you think of some other democratic ways of decision making? ଯେମିତି ଆମର ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆସିକି ବସିକି ଡିସିଜନ ନିଅନ୍ତି ହେଲା ହୁଏତ ଏଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହଉନାହିଁ ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ ସଭା ହେବା କଥା ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା କଥା ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଛୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଡିସିଜନ ବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବା ସବୁ ଲୋକ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିପାରିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡେମୋକ୍ରେସିର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଆଉ ଯଦି ତମେ କିଛି କମ ଡେମୋକ୍ରେସି ଭାବୁଛ ତାହେଲେ କୁହ ହେଲା। ଏତିକିରେ ଆମର ପାଠ ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ଆମେ ବିରାମ ଦେବା ଆଉ କଣ ଶିଖିଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଇଭାଲୁଏଟ କରିପାରିବ ନିଜକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ତମର କିଛି ନଲେଜ ଗ୍ରୋଥ ହେଇଥିବ। This also means that no country is a perfect democracy. The features of democracy that we discussed in this chapter provided only the minimum conditions of the democracy. The minimum condition देखिले हमें ideal state तो ही परिबनी गई। That does not make it an ideal democracy. Every democracy has to try to realize that ideal of the democracy decisions making. है This cannot be achieved one and for all. है This requires a constant effort to save and strengthen the democratic forms of decision making. What we do as citizens can make a difference to making our countries more or less democratic. This is the strength and the weakness of democracy. The fate of our country depends not just on what the rulers do, but mainly the what we as a citizen do. माने इथे कोन संभव करिया में जे गणतांत्रिक राष्ट्र रे गणतंत्र रे आइडियल स्टेट को हम पहुंची परिबा नै किंतु आइडियल स्टेट को देखि कि आमे काम करिबा आमे केमिति उन्नत हबा आ विभिन्न प्रकार स्ट्रेंथनिंग करिया हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग को आ एथिरे सब मुख्य भूमिका के रखिबो गवर्नमेंट नो इथे सिटीजन्स तो बा आमे ही डेमोक्रेसी केते सबल बा दुर्बल करिबा आम ऊपर निर्भर करूची आ हमर मत जोथरे आमे लोकଙ୍କୁ निर्वाचन करूछंती। This is what distinguishes democracy from other governments. Other forms of government like monarchy, dictatorship, one-party rule do not require all citizens to take part in politics. In fact, most non-democratic governments would like citizens not to take part in politics, but democracy depends on active political participations by all the citizens. That is why the study of democracy must focus on democratic parties or politics. है ना माने गणतंत्र अन्य फॉर्म ऑफ गणतंत्र डिक्टेटर एकछत्रवाद किमा डिक्टेटर है बा मोनार्की बा राजा बा वन पार्टी रूल जेमति चाइना कम्युनिस्ट पार्टी रशिया रे मध्ये कम्युनिस्ट पार्टी से भलिया ठिकाना सब लोकंकर ध्यान रखा जे न थाए किंतु गणतांत्रिक राष्ट्र रे समस्तंकर महत्व अछि बा समस्तंकर किछि ना किछि मायना बा माने रखी हला तो एतिकरे हम पाठ सल्ला ता नेक्स्ट स्टेप को जिबा भलसे पढा। जय हिंद।